Well, it's 3rd December already and we can't wait anymore for Divine's all new sophomore album Punya Paap. एल्बम के 3 ट्रैक्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और तीनों भी ट्रैक्स काफी पावरफुल थे एंड नाउ द एंटायर एल्बम इज सेट टू बी रिलीज्ड. But before we get to hear the entire album, we thought we'll just do a quick preview of album's track list and see what each track possibly has to offer. So here's Indic Indie checking what to expect from Divine's new album Punya Paap. डिवाइन ने अपने पहले एल्बम का नाम कोहिनूर रखा था, जिसमें वो अपने सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे. कोहिनूर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कट डायमंड्स इन द वर्ल्ड एंड इट स्टिल सिट्स इन द क्राउन ज्वेल ऑफ ब्रिटिश क्वीन. जैसे कोहिनूर हीरो की दुनिया का एक बादशाह है, वैसे ही देश के रैप सीन से जितने भी हीरे निकले हैं उनमें अगर सबसे चमकदार हीरा कोई है तो वो है डिवाइन. And that is probably why Divine named his first album as Kohinoor. Well, there is definitely a thing about Divine that makes him the brightest diamond in the rap scene. कोहिनूर के टाइटल ट्रैक में ही डिवाइन ने अपने सेकेंड एल्बम को इंट्रोड्यूस किया था. मे बी ही डिड नॉट थिंक ऑफ इट बैक देन, बट नाउ इट मेक्स द परफेक्ट सेंस टू नेम द सेकेंड एल्बम एज पुण्य पाप. सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव फाइनली टेस्टेड द सक्सेस? You take a pause to look back at things, the good things that you've done, the bad things that you've done. You learn from it and you make the journey forward. We think that is the exact thing Divine is going to talk about in his second album. पुण्य पाप में डिवाइन शायद अपनी द्विधा मनस्थिति की बात कर रहे हैं. द्विधा का मतलब होता है दोनों ओर से, और इन इंग्लिश इट मीन्स ऑफ टू काइंड्स. ऑल ऑफ आवर लाइव्स हैव द बाइपोलर नेचर. If there is good, there is bad. If there is rich, there is poor. If there is success, there is failure. And if there is happiness, there will be sadness. All that we are trying to do is to strike the balance of it all. In Punya Paap album, we are expecting Divine to talk about all these things and more. And with the kind of preacher Divine is, we think he'll get right to the point. You can see the continuation of bipolar theme on album's cover art as well. On cover, you can see Divine with folding hands for praying, with the focus on his hands. The right hand is full of tattoos with a bracelet on, whereas the left hand is completely clean and has a shining watch on it. बैक कवर पे भी आपको यही नजर आएगा. On one side there is a barefoot and on the other side there is a nice shoe. We think that the album art has very effectively depicted the soul of the album and all the credit goes to one man. So yeah, that is what we are expecting from Divine's all new album Punya Paap. What are you guys expecting? Do let us know in the comment box and please hit that like and subscribe button for more. See you again.